तो अब यहाँ हम लोग इसके अलग अलग पार्ट्स को लेवलिंग करते हैं। सपोज इधर जो पार्ट उन्होंने दिखाया है तो उस पार्ट को है ना, तो ये जो पार्ट हमें लिखा कौन, सो दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ यूटेरस। ठीक है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है एंड तापर देखैछंती एई पार्टटा, so this is the isthmus of fallopian tube। ठीक है, ये isthmus of fallopian tube है। नाउ उसके बाद ये जो पार्ट है इसको हम लिखेंगे एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तापरे এই जो पार्ट को लिखिबा एक और नीचे ले आते हैं ना, तो ये जो है इनफंडिब्यूलम। ओके, ये इनफंडिब्यूलम हो गया। तापर ये जो पार्ट दैट इज कॉल्ड क्या, फिम्ब्रिएटेड end। okay, so this is called fibrated end of fallopian tube। ठीक है, ओके, थोड़ा कर दें आगे। फाइन, infundibulum of fallopian tube and fimbriated end of fallopian tube हो गया। ओवरी तो हमने दिखा दिया है ऑलरेडी। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस है उसको हम क्या कहेंगे, जो बाहर वाला लेयर, दिस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। ये आउटर लेयर ऑफ यूटेरस। ठीक है, फाइन। तो ये जो आउटर लेयर ऑफ यूट्रस है उसको कहेंगे पेरोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सेकंड है मायोमेट्रियम। दिस इज मेड अप ऑफ क्या, स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स है, इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा एंडोमेट्रियम या मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर। अगर हम अपना रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी देखें तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। फाइन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर। हो गया। सो ये हमारा हो गया आपका सारा खत्म। सर, हाँ बोलो। सर आप वो MUO क्या लिखे थे मायोमेट्रियम के साइड हमारा में? शॉर्टकट है, मेड अप ऑफ, है ना। इसको याद रखना, ये हर इसको हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे। ओके, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया एक डायग्राम। तो इसी का एक रिलेटेड डायग्राम अगर आप कलर वाला डालना चाहेंगे तो हम इसको पेस्ट कर देते हैं। फाइन, चलिए देख रहे हो, तो ये आपका कलर्ड वाला डायग्राम है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं इसमें।
ना ये देख रहे हो, ये लोकेशन है, ये लोकेशन ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स है, बट ये आपका डॉर्सल व्यू है, राइट? बाप, ओके, दिस इज कॉल्ड द डॉर्सल व्यू, पीछे से दिख रहा है, ओके। चलिए, तो ये हमारा केस है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे, ओके, so you can start writing from here, okay. So the human female, okay, the human female reproductive system is made up of, okay, number one, ovary, okay, number two, क्या, genital tract, फाइन, ये जेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, एंड नंबर थ्री है एसोसिएटेड सेक्स स्ट्रक्चर्स, एंड नंबर फोर है सेक्स ग्लैंड्स। ठीक है जी। तो ये हमारा डिस्कशन है जो कि हम लिख रहे हैं, फाइन। चलिए, तो इसलिए दिस इज व्हाट इज द डिटेल। तो अब सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? जेनाइटल ट्रैक्ट से, क्योंकि हमने ओवरी का तो अभी कुछ डिस्कस किया नहीं है। तो हम लोग विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द, इसको हम उल्टा लिख देते हैं ना ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। इधर लिख लें जेनाइटल ट्रैक्ट, ओवरी को इसको कट करके इधर डाल देते हैं, है कि नहीं? चलो, तो इससे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है? तो विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। Now it is made out of क्या? गड़बड़ से, it is made up of the vagina, comma, uterus and uterine ट्यूब्स। इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपका फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है। तो इसीलिए अब ए हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेजाइना, ओके। सो इट इज द reproductive duct of the female, okay. It is the reproductive tube या duct, tube या tract of the female, comma, meant for genital functions, ओके। तो इनका काम क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू जेनाइटल, ओके। तो इट इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। रिप्रोडक्टिव ट्यूब ट्रैक्ट मेंट फॉर जेनाइटल फंक्शंस। इट क्या क्या फंक्शन है इसका भैया? इट रिसीव्स द क्या? It receives the penis during intercourse, full stop. Penis releases the sperms and semen in the vaginal canal, ठीक है?
तो पेनिस रिलीजेस द स्पर्म एंड सीमेन इन द वेजाइनल कैनाल, तो वो वहां छोड़ देगा। ठीक अच्छे। तापरे बी, इट is also known as the birth canal, as the fully developed fetus is delivered out via this tube। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है। नाउ एक रेड पॉइंट है, इन वर्जिन फीमेल्स, ओके, द vaginal opening is guarded by a membranous covering known as hymen। Okay, it is known as hymen। Fine. In human frigid female, the vaginal opening is guarded by a membranous covering known as hymen. It allows the passage of menstrual blood. Okay, it allows the passage of menstrual blood, but its presence indicates that it has that the vagina has not received any penis. Okay, so earlier the presence of hymen was treated. Okay, earlier the presence of hymen was treated as an evidence of virginity. Okay, but nowadays it has been seen that exercise, okay, games, etc. may also cause rupture of hymen. So nowadays the absence of hymen does not indicate if that girl is a virgin or not। ठीक है, तो आजकल उतना टेंशन नहीं है, पहले जमाने में ये कुछ ज्यादा ही सीरियस सिचुएशन हुआ करता था। ओके, हो गया। So this is with respect to the vagina. Now, अब हम लोग यहाँ कंटिन्यू करेंगे। Now उसमें लिखेंगे नोट 1, if the semen is released within the vagina of female, copulation is treated as true copulation। Okay, so if the semen is released within the vagina of the female, okay,
Okay, if the semen is released within the vagina of the female, copulation is referred to as treated as true. So animals who have penis are included in such case. Okay, the animal who have penis or similar structures, okay, that help in the deposition of sperms within the vagina. Okay, so animals who have penis or similar structures that help in the deposition of sperms within the vagina are included in such case. Okay, are referred to as, are thought to show true, या thought to undergo लिख सकते हैं ना, thought to undergo true copulation. ठीक है, तो इनमें ट्रू कॉपुलेशन होगा. Now note number 2. So if there is no penis-like structure in the male member of an animal species, it cannot deposit the sperm within the vagina of the female. Okay, so in them copulation is said to be false. Okay, fertilization, okay, copulation is referred to as false. बुझेला? तो अगर पेनिस है तो कॉपुलेशन क्या होगा? ट्रू. अगर पेनिस नहीं है तो कॉपुलेशन क्या होगा? फॉल्स. ठीक है जी? Because in that case one cannot deposit the sperms inside the female. Is it understood? Now note 3. तो इसमें क्या लिखेंगे? The vaginal canal, okay, is the site of ejaculation of semen. ठीक है? Now its walls are rough and these are also referred to as vaginal ragae. Okay, okay, इसको हम लोग vaginal ragae बोलते हैं. तापर हमें पढ़े सिवा ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो अब हम लोग चलेंगे बी, दैट इज द यूटेरस, या इंग्लिश में हम उसको कहते हैं वुम्ब या हिस्टेरा. ओके, ओके. नाउ fine, in the virgin females, in the virgin human females, क्योंकि हमें तो human से मतलब है. In the virgin human females,
it is equal to the size of an apple. But in case of ready, but in case of uh, full term pregnancy, मतलब जब डिलीवरी होने वाला है. But in case of full term pregnancy, this uterus occupies almost all of the pelvic cavity, abdominal cavity, and thoracic cavity. देख रहे हो? तो ये इतना बड़ा हो जाता है. Hence, it is that organ of the body that can grow and degrow maximum. ठीक है. तो इससे बड़ा ग्रोथ या डी ग्रोथ किसी भी ऑर्गन का नहीं होता. कोई शक? भाई जब डिलीवरी हो गया तब इतना बड़ा यूट्रस का क्या करेंगे? तो वो वापस छोटा हो जाता है. मुझला यस सर. चलिए. नाउ so it has number, yeah, it begins with the cervix, leads to the body, and ultimately it carries the sperm towards the ovum via uterine tubes या fallopian tubes. कोई शक? In this case, the cervix leads to the body, and body मतलब क्या है? Body of the uterus, not your body. And क्या हुआ? And ultimately it carries the sperm towards the ovum via uterine tubes of fallopian. ठीक है. सो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे ए. सो ए क्या है? सो ए इज cervix. Okay, cervix. Now it is also known as the door to the uterus, and which is guarded by two os. External os lies between vagina and क्या? Cervical canal. Okay. So it's also known as door to the uterus, and which is guarded by two os. उसको हम लोग os बोलते हैं. External os
lies between vagina and cervical canal. Imagine कीजिए, and internal arcs. Okay, and internal arcs. Okay, lies between cervical canal and body of the uterus. Hela? Now it is, yeah, cervix is made up of highly viscous tissue. Okay, the cervix is made up of highly viscous tissue. Okay, it resembles jam. Okay, it resembles jam. It resembles jam. Now, it is so viscous that more than 60% sperm cannot pass through it. ठीक है, तो वो इतना जेली लाइक होता है कि 60% जो है वो पास नहीं कर सकता है. Understood? It is so viscous that more than 60% sperms cannot pass through it. Okay, in general time. In general time. But when the क्या बोलिए, जब आपका जो ओव्यूलेशन का टाइम होगा, बट व्हेन द एस्ट्रोजन and LH levels are high. Okay, but when the estrogen and LH levels are high, okay, comma, viscosity of the cervix becomes diluted. Hence, passage of sperm is allowed. Okay. समझ में आया? तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, तो ये कब होता है? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. ओके, ठीक है, तो इसीलिए आपका ओव्यूलेशन, सी व्हाट हैपेंस, अगर आप देखेंगे द पैसेज, तो मोर फ्रीली कब ये पास करता है? मोर फ्रीली इट इज पास्ड व्हेन द LH लेवल इज हाई, तो तब आपका स्पर्म जा सकता है अंदर, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी विस्कस. ओके, दिस is one of the reasons that affect fertility. Okay,
फर्टिलिटी, इसमें हम ग्रीन पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, तो हाईली विस्कस सर्वाइकल म्यूकस may be one reason of infertility of a female। तो समझ रहे हो? तो अगर एक फीमेल का बहुत ज्यादा विस्कस है क्या, आपका सर्वाइकल म्यूकस, तो शायद वो कभी माँ नहीं बन सकती। ओके, तो शायद वो कभी माँ नहीं बन सकती जब तक आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। क्लियर ना? तो उसके बाद आ जाएगा क्या, यूट्रस या क्या, बॉडी ऑफ द यूट्रस। ओके, तो इसको अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द यूट्रस। फाइन। ठीक है, फाइन। So it is also the site of implantation of fetus। ये जो बॉडी ऑफ यूट्रस है, यही fetus का implantation होता है। It is also the is also the site of implantation of fetus। ठीक है जी। Now तो इसीलिए its outer wall is known as perimetrium। The middle layer is very thick and is made up of क्या? Fine. The middle layer is very thick and is made up of what? Smooth muscle cells. Smooth muscle cells। Okay. Hence, the middle layer is very thick and is made up of smooth muscle cells. Hence, the uterine contractions are involuntary। Okay, ये involuntary contractions। Clear? The inner lining is known as
Raba, endometrium. Okay. The inner lining is known as endometrium. Now, this endometrium, okay, is again made up of two layers of tissue. Okay? This endometrium is again made up of two layers of tissue. तो उसमें नंबर 1 है stratum basalis of endometrium. Okay. Stratum basalis of endometrium. Fine. Now, this layer is made up of totipotent cells of the reproductive system. Okay. So this layer is made up of totipotent cells of the reproductive system. ठीक है जी? They help to regenerate the outer stratum functionalis layer in case of every month. Okay. So stratum basalis, this layer is made up of totipotent cells of the reproductive system. They help to regenerate. Okay. Okay. So they help to regenerate the outer stratum functionalis layer in case of every month. Yeah,